वैष्णवो यानी वैष्णव होना चाहिए। वक्ता देखो હવે એવું ન સમજવું કે વૈષ્ણવ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે એટલે વૈષ્ણવ એટલે કોઈ સંપ્રદાયવાદની વાત છે, નહીં, બિલકુલ નહીં। આ વૈષ્ણવ શબ્દનો અર્થ તમે હું બરાબર સમજી શકતા નથી, સમસ્યા ત્યાં છે। વૈષ્ણવ શબ્દની અંદર વિષ્ણુ શબ્દ રહેલો છે, એ કોઈ સંપ્રદાયવાદ આ सांप्रदायिक शब्द नहीं, लेकिन वैष्णव के भीतर विष्णु शब्द छुपा हुआ है। और विष्णु क्या है? विष्णु शब्द ये भगवान विष्णु की भी बात नहीं है मेरे भाई बहन। विष्णु यानी सर्वव्यापक, जेनी दृष्टि में समानता होय साहेब, जेनी दृष्टि में बधु सरखू होय, बधु समान होय, कोई भेद न होय साहेब। कोण ऊंचो के कोण नीचो, कोण मोटो के कोण नानो, आज भेद दृष्टि छे जेनी दृष्टि में न होय। અને આવું વ્યક્તિત્વ ના દર્શન તમને મને જ્યારે થાય ને ત્યારે એના ચરણ પકડી લીધો, એ આ સમાજનો મોટા મોટો વૈષ્ણવ છે સાહેબ। वही वैष्णव की पहचान है, जो सबको समान भाव से देखे, नहीं के भेद करे, ये वैष्णव की निशानी, ये लक्षण। तो पहला सोपान विरक्तो, दूसरा सोपान वैष्णवो, और सुनिए तीसरा सोपान है विप्रो।